So the unit third is commercial production. Okay, commercial production में हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे is a सोलानम ट्यूबेरिज्म. सोलानेसी फैमिली देखनी है हमको. Commercial production of potato. Okay, so the potato is a tuber. Everyone knows that. What is potato? आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो. आती है मैम. Okay. So the potato is a starchy tuber. Potato क्या होता है? एक starchy tuber of the plant Solanum tuberosum and is a root vegetable native to the America and edible vegetable है ये. The plant is perennial in the nightshade family and what is the family name? Solanaceae. And botanical name of potato is Solanum tuberosum and family is the Solanaceae. So the potato is the world's fourth important food crop after wheat, rice, or maize because of its great yield potential and high nutritive value. It constitutes nearly half of the world's annual output of all root and tuber crops. Okay, so this is the scientific classification of potato. The plantae, kingdom क्या है इसका? Plantae, order is the Solanaceae, family is the Solanaceae, and subfamily is the Solanoideae, and genus is the Solanum, and botanical name Solanum tuberosum. Next is the introduction. So potato tuber are used as a vegetable. So potato tuber are rich in starch. मैंने अभी explain किया starch, rich in starch होते हैं वो. So used as a good source of energy in diets. डाइट में यूज करते हैं ना हम. इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ चिप्स. बहुत सारे डिशेस बनाने में हम लोग यूज करते हैं जैसे कि चिप्स है. इट हैज गॉट मेनी medicinal properties also and it is one of the most important crop of world because it is worldwide and new product from potato is a biodegradable plastic. एक न्यू प्रोडक्ट क्या है? पोटैटो से न्यू प्रोडक्ट क्या बन रहा है? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक. एंड मोर देन बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड ईट पोटैटो and the potato is the third most important food crop in the world after the rice wheat in term of human consumption. Next is the morphology. So you can see in the picture morphological structure of a potato plant. The erect perennial or aromatic herb up to 1 meter tall. Okay, so the tuber is morphological, a fleshy stem bearing a bird's an eye in the exile of small scaly like a leaves. I'm showing the next image. This is the morphological structure of potato plant. Okay, क्या क्या प्रेजेंट है इसमें? फ्रूट प्रेजेंट होता है, then flower, inflorescence, leaf, main stem, and potato is a underground stem. Tubers, देखो यहाँ पे tubers कहाँ पे present है? So leaves divided into 3 to 5 pair of leaflet. The leaves are compound, alternate, irregular, and odd pinnate. Odd pinnate means what is mean by odd pinnate? यहाँ पे क्या बताया हुआ है? लीव्स जो है वो कंपाउंड भी है, अल्टरनेट फॉर्म में भी होते हैं, इरेगुलर भी है और odd pinnate. Odd pinnate means the having a leaflet on each sides of the petiole and having a single leaflet at the tip of the petiole. Okay, leaflet है but on each side of the petiole and having a single leaflet at the tip of the petiole.
and flower is a white to pink, purple or a blue color. Different colors के flowers present होते हैं. Then seeds are produced in a berry form. Then fruit is a succulent, means spherical, yellow, green to purple berry or up to 4 centimeter in diameter. Okay, so this is the morphology. Okay, this is the morphology of potato plant. Next is a recommended varieties. There are different varieties of plant. Potato plants are present. मतलब यहाँ पे different varieties के potatoes होते हैं, है ना? मतलब thousand of cultivars are available which vary in character such as a tuber size, shape and skin color. उसके according उनकी varieties होती है. जैसे यहाँ पे कुछ varieties बताई हुई सीता, तुलसी, लक्ष्मी, मणिके. Okay. Next is a factor to consider when choosing a variety. जब भी हम प्लांट पोटैटो सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या करना है, वहाँ पे कुछ फैक्टर है जिसको कंसिडर करना पड़ेगा. So factor to consider when choosing a variety, the farmer needs to consider following when choosing his variety. Consumer choice. First factor is a consumer choice, means salability. Salability we can also called as a profitability. Okay, and yield, maturity देखनी है वहाँ पे. मैच्योर प्लांट सेलेक्ट करना है. ओके, अनमैच्योर नहीं करना है. डिसीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, डिसीज फ्री होना चाहिए. जो भी हम क्रॉप सेलेक्ट करें वो डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज होनी चाहिए. देन सीड अवेलेबिलिटी. ओके, so these are the some factors to be considered when choosing a varieties. Next is the growth stage. There are 5 growth stage. Okay, means growth first, second, third, fourth, and fifth. The first stage is a sprout development. Okay, step by step वहाँ पे stages आ रहे हैं. Means first step में क्या हो रहा है, first stage में sprout जो वो develop होता है. Next जो stage है उसमें क्या होगा, vegetative growth होती है. थर्ड में क्या होता है, tuber initiation, means वहाँ पे tuber का initiation होगा. देन फोर्थ जो है उसमें ट्यूबर बल्किंग है. एंड लास्ट इज अ मैचुरेशन, मीन्स जो लास्ट स्टेज होती है जिसमें पूरी तरह से ग्रोथ का मैचुरेशन होता है. ऐसे समझ में सबको. तो फर्स्ट स्टेज देखो यहाँ पर ग्रोथ स्टेज फर्स्ट, इसमें स्प्राउट डेवलप हो रहे हैं, है ना? मीन्स स्प्राउट डेवलप फ्रॉम आई ऑन अ सीड ट्यूबर्स एंड ग्रो अपवर्ड टू इमर्ज फ्रॉम द soil. Okay, जिसमें root begin to develop at the base of the emerging sprouts. Next जो है वॉइस आ रही है ना मेरी? हेलो, हेलो. मैम आती है. ओके, हाँ. So growth, first growth is a
sprout development. Next is the growth stage second. This is the vegetative growth. Vegetative growth में क्या हो रहा है? Leaves and branch stem develop from above ground nodes along emerge sprouts. Okay, means root and stolon develop at below ground nodes. दोनों भी यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, रूट्स और स्टोलॉन्स डेवलप होंगे इस स्टेज में. नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेज, ग्रोथ स्टेज. दिस इज द थर्ड स्टेज. यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्यूबर का इनिशिएशन हो रहा है. सो ट्यूबर फॉर्म्स एट स्टोलॉन टिप बट आर नॉट येट appreciably enlarging. Okay, next जो fourth step है, fourth stage is a growth stage. Fourth, tuber bulking. Tuber cell expand with the accumulation of water, nutrient and carbohydrates. यहाँ पे accumulation हो रहा है water, nutrient और carbohydrate का, and tuber become the dominant site of a deposition of a carbohydrate. Okay. Next is the last stage, growth stage. Fifth is the maturation. So veins turn yellow and lose leaves. फोटोसिंथेसिस क्या होगा? यहाँ पे डिक्रीज होता है. ट्यूबर ग्रोथ स्लो हो जाएगा. ओके, दिस इज द लास्ट स्टेज. नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड. हाउ टू प्रिपेयर अ सीड बेड? तो deep plug the soil to the depth of 22 to 25 सेंटीमीटर. फर्स्ट स्टेप क्या करनी है? वहाँ पे सॉइल को प्लग करना है. डीप प्लग द सॉइल एंड डेप्थ कितनी होनी चाहिए? अबाउट 22 टू 25 सेंटीमीटर. ऑल स्टोन्स शुड बी देन रिमूव. क्या करेंगे वहां से? पहले तो हमने सॉइल को डेप्थ प्लग किए, देन स्टोन्स वहां से रिमूव करना है, बिकॉज स्टोन कैन रेज द पोटैटोज, मीन्स अलाउिंग इन्फेक्शंस ड्यूरिंग अ हार्वेस्टिंग एंड मस्ट बी रिमूव. तो वहां पे स्टोन्स को रिमूव करेंगे. स्टोन कैन बी रिमूव बाय अ हैंड एंड अ मशीन कॉल्ड अ डी स्टोनर. हैंड से भी कर सकते हैं स्टोन को रिमूव, और मशीन से भी कर सकते हैं. सो मशीन इज कॉल्ड एज अ डी स्टोनर. द सॉइल इज देन कल्टिवेटेड इनटू अ रीचेस यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड मशीन. नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है? रिच इज रेस्ट अराइज एरिया ऑफ सॉइल इनटू विच द सीड इज सोwn. Then ridges should be between 75 to 90 सेंटीमीटर. इतना होना चाहिए उसका. Means ridges should be 75 to 90 centimeter width and 15 centimeter deep. Then wide ridges lessen potatoes greening, lessen compaction and give great yields. So ridges prevent the seed from waterlogging. यहाँ पे हम ridges क्यों बना रहे हैं? Because it prevent the seed from the waterlogging. So leads sorry for the interruption. Seeds are sown into the ridges at the depth of 10 centimeter below surface. Means कितना होना चाहिए? 76 centimeter apart. Okay. The spacing of seeds in the ridges is governed by the size of the seed. अब कितना स्पेस रखना है सीड्स का, वो किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ द सीड्स पे. ओके. As seed size increases, the number of eyes, means auxiliary birds per tuber increases. अगर सीड की साइज वहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो स्पेस भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. मीन्स अगर सीड स्मॉल है तो स्पेस भी वहाँ पे हम कम करेंगे. These protect the seeds from the excess sunlight. Seed should be sprouted before sowing as it speed up growth. स्पॉटेड होना चाहिए. तो वहाँ पे ग्रोथ की स्पीड क्या होती है? ज्यादा हो जाती है. प्लांट एमर्जेंस एंड yield. नेक्स्ट इज द फील्ड एस्टैब्लिशमेंट. तो पोटैटो आर प्लांटेड इन ओपन रिज और ड्रिल्स. ओपन में उसको वहाँ पे ग्रो करना चाहिए. दे आर अर्थ अप और माउंटेड एंड फरो डाउन एट अ intervals. Okay. Next point is the irrigation.
So potato need a frequent irrigation, means light irrigation is applied at an interval of 15 days and necessary. So potato needs frequent irrigation. The first irrigation should be used immediately after sowing. First irrigation कब करना है? जब हम sowing करते हैं potatoes को, उसी time पे immediately after sowing irrigation होगा. This is the first irrigation. Thereafter at 1 week interval, 1 week के interval के बाद वहाँ पे irrigation का process करना है. Means after tuber formation the frequency of irrigation is decreases. जब ट्यूबर का फॉर्मेशन हो रहा है उसके बाद क्या करना है, वहाँ पे इरिगेशन का जो फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज करता है. केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल इरिगेशन दैट द वाटर डज नॉट रीच फी टॉप ऑफ द रीचेस. ओके, वहाँ पे केयर करनी है. तो इरिगेशन शुड बी स्टॉप अ फ्यू डे बिफोर द हार्वेस्टिंग. जब हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाएगा तो वहाँ पे क्या करना है, बिफोर द हार्वेस्टिंग टाइम इरिगेशन को स्टॉप करना है. Next is the this is the irrigation process. सबको समझ में आया what is process of irrigation? Next is the earthing up. So earthing up is an important post sowing cultivation of the potato crop. Okay, this is the post sowing cultivation. So when the plant is 15 to 20 centimeter high, a ridger is used to bank up more soil around the stem. Okay, वहाँ पे क्या करना है, bank up more soil around the stem. This is the earthing up process. Because earthing up prevent greening. Greening को prevent करता है वो. Okay, kill और germinating annual weeds. जो भी annual weeds आते हैं उसको वहाँ पे वो kill करता है. Then this help keep air in at the root of the plants. यहाँ पे ये उसके functions है. Help क्या कर रहा है वो? This help keep air in at the root of the plant. And when potato hulls meet across the drain, the weed will be controlled. Then earthing up is important because it keeps the soil loss, means prevent greening of potatoes, then stop annual wheat from the germinating. So these are the some importance of earthing up. Okay, और increase yield भी increase कर रहा है वो यहाँ पे. Next is the soil suitability. तो कौन सी soil suitable होती है for the potato plant? So the ideal soil is a deep well drained, medium heavy loam with as a few stones as possible and high pH should be avoided. यहाँ पे pH कितना होना चाहिए, 5 और 5.5 is optimum for this crop. Okay. Next is a disease. So potato blight, a fungal disease which can affect a plant in humid weathers. So these are the some diseases which harm the potato plants or potato tuber like gangrene or common scape potato mosaic viral diseases spread by aphids. Okay, so these are the some diseases. Next is a potato blight. So potato blight or a phytophthora is a phytophthora infestans is a fungal disease. Okay, पोटैटो ब्लाइट एक फंगल डिसीज है. सिम्टम्स क्या होता है उसका? सिम्टम्स ब्राउनिंग एंड सब्सिक्वेंट ब्लैकनिंग ऑफ द लीव्स एंड रूटिंग ऑफ द ट्यूबर. वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैकनिंग होती है लीव्स पे, लेसियंस फॉर्म होते हैं, ब्लैकनिंग ऑफ द लीव्स एंड रूटिंग ऑफ अ ट्यूबर. इट कॉजेस प्रीमैच्योर डेथ ऑफ हेलम with a resultant yield losses. Yield वहाँ पे लॉस भी हो सकती है. So these lead to infect and rooting during a storage. Next is the spread of potato blight is favored by a warm, humid weather conditions. Okay, so these are the some picture. Okay, potato blight इस तरह से infect करता है वो leaves को. See these images. So preventing blight, how to prevent the blight? Okay, do not sow seeds showing any signs of a blight. अगर कोई हमको ऐसा लग रहा है कि इस पे
ब्लाइट का कोई स्पॉट वगैरह है तो हम वहाँ पे वो सीड को सो नहीं करेंगे. डू नॉट सो सीड शोइंग एनी साइंस ऑफ अ ब्लाइट. सो earthing up creates great distance from a root course and tubers. Okay, remove all tubers at harvest, known as voluntary potatoes. Remove करने सारे tubers को, then spray with a contact or a systematic fungicides. मतलब डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल स्प्रे कर सकते हैं. तो स्प्रे विथ अ कॉन्टैक्ट और systematic fungicide throughout the growing seasons every 10 to 14 days. Okay, remove helms before harvesting. Next is the preventing disease. So preventing disease क्या होंगे? Disease are prevented by a spraying fungicides every 7 to 10 days. जैसे मैंने अभी explain की ना कि वहाँ पे हम कैसे prevent कर सकते हैं, different type के fungicides spray करके. There are different types of fungicides. कौन कौन से fungicides होते हैं? Like a systemic means goes to all part of plant and is best when the growth is rapid. जब growth rapid हो रही है तो यहाँ पे वो हर पार्ट पे हम लोग यूज कर सकते हैं. ओके, देन contact only protect what is touches. So these are the preventing diseases. Next is the pest in potato cultivations. The main pest of potatoes are wireworms. Wireworms can eat into a tuber. So common after a grass prevented using a poison bats, then slugs, aphids. These are the some pests in potato cultivations. Potato nematodes. Okay, so eat into a tuber controlled by a crop rotation. These are the some images. Next is a weed control. So crop are sprayed with a contact herbicides when 1/4 of plant have a appear over the soils. And shading refer to the time when plants meet across the ridges. And earthing up is also prevent the weeds. Earthing up में हमने देखे थे कि weed को control करने में use होता है ना? Next is a nutrition and fertilizer required. So there are different types of fertilizer used for the potato tubers. So soil should be tested before applying fertilizer. Firstly क्या करना है? Soil को test करना है. Soil should be tested before applying. कोई भी fertilizer apply करने से पहले क्या करते हैं? Soil को test करते हैं to determine what is requirement and how. कितने रिक्वायरमेंट पे वहाँ पे हमको फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, कौन से टाइप का करना है, कौन सा फर्टिलाइजर अप्लाई करना है. तो पहले क्या करना पड़ेगा? सॉइल को डिटरमाइन टेस्ट करना पड़ेगा. ओके, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो फर्टिलाइजर यूज होता है. तो टिपिकली एप्लीकेशन रेट नाइट्रोजन है, मीन्स नाइट्रोजन 125 to 150 kg per hour. ओके, सो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. These are the some fertilizers. Next is a storage. So building which store the potatoes must be like a leak proof. है ना, leak proof होना चाहिए, frost proof होना चाहिए. Potatoes are also covered with a layer of straw to protect against frost. Okay. Then temperature कितना होना चाहिए जहाँ पे भी हम स्टोर करें तो 4 to 6 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए. ओके.